Hey guys, so I'm finally doing this, starting my own YouTube channel, and I'm really excited. I shot like 2-3 videos, different videos before this, but I wasn't confident about posting them. So this one I thought I'm just gonna do it and let's see how it goes. So this video is about how I cleared my acne. So I had an acne problem since I was a kid. It started when I was a teenager. जब मैं 13-14 years की थी तभी acne problem चालू हुआ. I'll attach a few pictures also, like how it was. It was all hormonal acne. Like मेरे गाल पूरे भरे हुए थे. There was too much on my forehead as well, and now I just love my skin the way it is. Like a few years back, 5-6 years back, I started eating like really healthy food, avoided junk food, like stopped eating fried food. That actually helps a lot over time. You can see the results after a few years. So yeah, that is one, a good thing that I did. And I am actually gonna tell you how I was able to remove all of that acne from my face. बीच में तो ऐसे हो गया था कि completely clear हो गया था, and then जब lockdown चालू हुआ, there were like again few bumps popping out on my face, and there were like few bumps popping out on my face. And I wasn't really confident. Like last year में मेरा चेहरा फिर से थोड़ा ख़राब हो गया था, and मेरे को घर से निकलने में मैं कैमरा भी खोलती थी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था. मैं घर से निकलते टाइम भी सोचती थी, मैं रोती थी लिटरली. But it's natural, but I still feel insecure about it, and maybe over time I'll feel more confident. अभी मुझे इतना ये नहीं लगता. It's just like skin ही तो है, बस पिंपल आएगा जाएगा. It's just the way it is. So let's go, and I'm gonna tell you what products I used to clear out my acne and how did I do it. So this video, I think it will be more helpful for people, those who have oily and combination skin types, because generally people with those skin types tend to have acne and everything. So even I have an oily skin type. ये पे क्या लगा है मेरे चेहरे पे? पता नहीं, कैमरा में से लग रहा है कुछ तो लगा हुआ है, बट कुछ है नहीं. ये मेरी स्किन अभी तो काफ़ी थोड़ी अच्छी हो गई है. इट्स हेल्दी. आई हैव अ गुड ग्लो. देयर फ्यू blemishes which are going away. So I'm happy about it. Okay, so first of all, जितना हो सके उतना अपना स्किन केयर मिनिमल रखो. मैंने सब ट्राई करके देखा है. लिटरली महंगे से महंगे प्रोडक्ट्स 2-3,000 रुपीज़ के फेस वॉशेस, क्रीम्स, सीरम्स यूज़ करके कुछ काम नहीं करता है, कुछ भी नहीं. ट्रस्ट मी, नथिंग वर्क्स. जितना आपका स्किन केयर मिनिमल हो, जितना आपके स्किन के लिए सूट होता है, दैट इज़ दी बेस्ट. दैट्स व्हाट वर्क्स एंड नथिंग एल्स. आई वुड सजेस्ट कि आप एक डर्मेट को भी दिखाइए, एंड एवरी 2-3 months में जस्ट गो एंड गेट चेकअप डन और वॉट एवर, for a safer side. So for me, I started using a face wash which had salicylic acid, glycolic acid, tea tree oil, which are ingredients suitable for acne skin type. So those face washes really helped me. Right now I'm using this face wash by Cheryl's Cosmeceuticals. I'm just showing my skincare routine right now. So this is my face wash that I use, and I use this moisturizer, Clinique moisturizer. I love this moisturizer. I've been using it from the past 5 years now. I am in love with it. I will never change my moisturizer for anything. And this is the sunblock that I use. This is again by Cheryl's Cosmeceuticals. And रात में मैं बस फेस वॉश करके एलोवेरा जेल, कोई भी एलोवेरा जेल ले सकते हो, बस वो लगा के मैं सो जाती हूँ. ये तो बेसिक था मेरा माई स्किन केयर थिंग, माई रूटीन. बट वॉट एक्चुअली वर्कड ऑन माई एक्ने, आई टेल यू नाउ. Okay, so now coming to the part where I'll actually
tell what medications or creams specifically that I used for my acne. So there was this tablet called Tritiva. It is a tretinoin tablet. So women who are pregnant or planning to get pregnant, or it's not for them. तो आई यूज्ड 10 mg टैबलेट्स. आप अपना डोज ज़्यादा मत बढ़ाइए, एंड ऑल्सो consult a doctor or family doctor before taking these tablets. I'll attach a picture if I can. So these tablets I used to take one every night after my dinner, and I used them continuously for 2-3 months. The problem with these tablets is that it makes your skin really dry. It basically changes your skin type. Your skin gets dry, and that's how like acne निकलते जाता है. And lips भी काफ़ी dry होते हैं. तो if you're using it, just make sure that you're carrying a lip balm and a moisturizer with you, because it tends to get very dry. इसलिए मैंने बोला कि आप ज़्यादा mg वाला मत लीजिए. Like 5 to 10 is enough, I think. And obviously consult a doctor if you are using this tablet. And ये इससे तो definitely मेरा acne कम हो गया, like almost चला ही गया था. And उसके बाद like for my marks I started using this. This is again a tretinoin cream, like retino cream. Again, women who are pregnant or planning to get pregnant, this is not for you. This cream helped a lot. Like again, इससे skin dry होती है. तो even please consult a doctor. Why I'm saying consult a doctor, because you cannot take those tablets continuously. And जिनका हार्मोनल एक्ने रहता है, एक पीरियड के बाद एक्ने लाइक ये सब करने के बाद तो बंद हो जाता है, बट अचानक से आउट ऑफ नोवेयर इट विल पॉप आउट अगेन. सो इसलिए डूइंग रेगुलर चेकअप्स इज़ लाइक रियली गुड. सो दिस हेल्प मी. सो अभी तो मैं ये सब कुछ यूज़ नहीं करती हूँ. अभी बस मेरा जो नॉर्मल स्किन केयर रूटीन है वही चल रहा है, एंड इट्स गोइंग रियली नाइस एंड आई एम हैप्पी. I've actually increased my vitamin C intake as well. So उसकी वजह से like skin में काफ़ी glow और काफ़ी it's working well for me. So yeah, sometimes I take those like vitamin C chewable tablets जो रहते हैं, like मैं लेती हूँ. They are like sweet also, and they are tasty. You can get it anywhere, like normal store, like grocery store में भी मिल जाता है. So they are like good. This is the like external thing. These are like all external things, but doing something internally for your skin is also like really important, like staying hydrated. I know many of you think that it does not work, सिर्फ पानी पीने से कुछ नहीं होता है, but होता है definitely. Over time ऐसे तुरंत results नहीं आते. Like over time you will definitely see the results. Like working out, eating healthy, eating good really helps. मैंने notice किया है, जब से मैंने oily food, junk food खाना बंद किया है, तब से मेरा almost 50% acne कम करने का काम वहाँ से ही चालू हुआ है. So it helped me. It personally really helped me. And I don't know, mood भी अच्छा रहता है ज़्यादा. If you eat fresh food, your mood is like really good. If you're eating like green food and healthy food and fruits and everything, and add a fruit juice in your diet, like it's really helpful for sure. So that is it. Internally is also important. जितना externally important है, उतना internally भी ध्यान रखना इम्पॉर्टेंट है स्किन के लिए. एंड ये सब खाने पीने से ऑटोमेटिकली सब इम्प्रूव हो जाता है. हेयर भी इम्प्रूव हो जाते हैं, हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाती है एक टाइम के बाद. लाइक माई हेयर अभी इट्स लाइक ओकेश. माई हेयर इज़ लाइक अभी मेरे बाल थोड़े ऑयली स्टिकी हो गए. मैंने 3 दिन से वॉश नहीं किए, कल करने वाली हूँ मैं. ओके, सो आई होप you enjoyed the video, and please make sure to like, comment and subscribe if you want more such videos. I'm planning to make more videos related to skincare, related to makeup and everything.
आई एम ट्राइंग टू पुट आउट मोर एंड यू नो जैसे जैसे वीडियोस आते जाएंगे वैसे वैसे मेरा बात करने का, वीडियोस बनाने का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा. सो आई होप दिस जर्नी गोज़ वेल फॉर मी एंड आई एम गोना डू इट. Yes, bye. Bye.